Okay guys, right now I'm in Pakistan on my vacation. It's my hometown also. Yesterday what happened is it was punctured and I went to the shop. They fixed it but it didn't work out. Again it's punctured. So I was thinking why not to take you guys along with me and show you how these people make those puncture here in Pakistan. And here you can see it's totally flat. So I'm gonna go to this guy and I'm gonna tell him why he made this bad puncture. So it will be interesting video. So I was thinking to show you guys along with me also. And this is the street. You can see here. It's really amazing. That's my hometown actually. This motorcycle is not big. The engine is very small. It's 70 cc. And the guys using some slang language. That's why we're laughing. So this motorcycle has a very small engine and it's very popular in Pakistan. Honda CD70. So it's a very small engine, 70 cc. People use it for commuting. Mechanic shop. It's not that far. So that's why we're going like that. And we don't have equipment to fix tires. In Pakistan, usually we take every small problem and fix it in a shop because the labor is very cheap. That's how we're doing that. यार पंक्चर आपने सही नहीं लगाया। भाई ठीक था, करता है लेकिन हम तो गए, हम तो चलाए नहीं, हम घर पे ले गए, वापस आए हैं घर से, हमने चलाया नहीं, ये पंक्चर हुआ होगा। मुझे लगता है पंक्चर लगाने के बाद आपने दोबारा चेक नहीं किया। Here's the guy. This is the guy who made this puncture at first time, and now I'm asking why did they do that in the first place? Very wrong. So now he's gonna check it, what happened, and let's see how he's gonna do that puncture. Okay, let's see those tools. These are all the tools they use. इसका टूर हम करेंगे। यार ग्लव्स नहीं पहनते, हाथों में ग्लव्स वगैरह नहीं होता है। They don't wear any gloves. और जूते भी नहीं पहने ना, कौन से सेफ्टी शूज होते हैं लोहे के आगे बोलते हैं। The same Pakistani tradition suit I'm wearing it. The same as they are using it for working even. ब्रेक क्यों बनाएंगे ताकि उसे वो कर रहे हो जो पंक्चर सही नहीं लगे तो आपने क्या चलो नहीं वो है ना, ये बहुत कम लगती है ना ब्रेक। हाँ हाँ इसको ठीक कर देंगे। अच्छा क्या करेंगे, टाइट चाहिए? देखना पड़ेगा, तार लगे तार मार देंगे। अच्छा वरना ये छुट्टी होती है, इसे पीछे कर देंगे थोड़ा। ओके यहाँ पे पंचर होगा सब खुलेगा। जहाँ पे नहीं होगा वहाँ पे नहीं खुलेगा। नहीं है, एक ही है। खोलते हैं ना पता नहीं चलता ना। अच्छा वो जब ब्रेक होता है ना पता नहीं चलता, फिर अब आप भर के चेक करना पड़ता है। अच्छा इसलिए पिन लगा दें। ये पिन लगा दें। फिर
is a mark. They don't use any pen. So what they do is that this is a mark that they're gonna fix in here. Well, this is the way how they do that one. Usually people do that with a mark. Now they're checking if there is some nail inside, which is causing those puncture. I think they found something. No? Nothing found yet. ये क्या कर रहे हैं? इसे पता चलता है? So they are using furry towel. So if there is a nail, it can stuck on the towel. So this is their way how to check it. So they are using this as a cover, like a extra protection. So this is not only a puncture, but also they're doing this drum brake change also. Some drum brake. सही कह रहे हो, पहले जो कह रहे थे ना जबरदस्त. Now what they have done is then they give some cushion and it makes the brake stable and it touches the drums more. This is what they do. I've never seen this kind of system before. Yesterday when I came here, he fixed that puncture and they asked me 70 rupees, Pakistani rupees, and but he was so honest, I paid him like 200 rupees extra. Now he's fixing it. Let's see how much money he wants and how much should I give to him now, because it wasn't on my part, but I think they deserve more. अच्छा कितने रुपए हो गए? 70. यार उस दिन 200 एक्स्ट्रा देता तो मुझे चाहिए था, लेना नहीं चाहिए था. I'm just joking. I'm gonna give to him. So job is done and let's see how it works now. I'm gonna start it again. But before that, I wanted to show how the shop looks. What do you think, Akash? Sure. मैं अपने शॉप पे टोटल कराऊँ. दिखाओ मेरे साथ. दिखा दे भाई, हमारी शॉप है. अच्छा. ये सारा जो है ये इसको आप बेचते हैं? हाँ, ये भी बिक जाता है. कैसे बिकता है ये 15 में लगेगा. अच्छा. ये किसके किलो के हिसाब से बिकता है, क्या होता है? किलो के हिसाब से बिकता है. किस चीज़ का सामान है? स्पेयर पार्ट है, मोटरसाइकिल का. स्पेयर पार्ट. अच्छा, ये भी करते हैं. ये हमने पहले से लेके रखा होता है जो ज़्यादा मसले मसाइल आते हैं मोटरसाइकिल.
और ये क्या, ये तो पुराना लग रहा है। ये पुराना है। फिर बेच के फेंक क्यों नहीं देते इसको, या बेच क्यों नहीं देते? अक्सर ठीक है इसको ही भाई, दिखाओ, इसको ही। जो गरीब होते हैं ना, हाँ हाँ। जिन नया नहीं डलवाने के पैसे होते तो फिर हम भाई अच्छा, तो अगर कुछ खराब हो जाए तो इसको यूज़ कर लेते हैं। तो ये लोगों ने क्यों फेंका हुआ है मोटरसाइकिल से? ये भाई जो कोई सरकार में अगर नहीं देते हैं बाइक को कबाड़ पे, वो जो सही होते हैं वो रख लेते हैं। अच्छा, बाइक भी कबाड़ में दिखती है। अच्छा, ये बताएं आपका इसमें सबसे ज़्यादा इस्तेमाल होने वाला टूल कौन सा है? सबसे ज़्यादा ये होते हैं, मतलब ये जो हुए हैं स्कैनर। अच्छा, उसके बाद कौन सा यूज़ करते हैं? ये होता है। अच्छा तीसरा नंबर तो ये है। अच्छा ये होता है चौथा नंबर। अच्छा, आपको सबसे ज़्यादा मज़ा किस पे इस्तेमाल करने में आता है? मज़ा आता है या नहीं? किसका आता है मज़ा? किसका आपको मज़ा आता है करते हुए? सही। और अभी ये जो आपका पड़ा हुआ है, ये टूल बॉक्स, ब्रोकन रैचेट, आप अगर आप ये बनना हुआ था तो आपको ये यूज़ करने में मज़ा आता है? अगर आपके पास ऑप्शन हो भाई आपने ये इस्तेमाल करना चाहिए, कौन सा इस्तेमाल करना? आदत की होगी। Guys, they don't want to use ratchet, even though they have some ratchet, but they say that if they both are okay, they're gonna prefer this one because they are very used to it. Nice. Or deer, impact driver. So guys, they have some ratchet here. लग रहा है ऐसे है जैसे आपने इसको इस्तेमाल नहीं किया। इसके ये छोटा है ना, ये कम होता है। They don't use it at all. सही है। इस सारे टूल से आप इंजन भी खोल लेते हैं, सारे काम करते सारा हैं। अच्छा अच्छा। तो फोटो दे मार। कंप्रेसर, ये कितना पुराना कंप्रेसर है? इसके भी 15 साल से सही चल रहा है। ये तो मुझे लग रहा है लीक हो रहा है यहाँ से। ये होता है। अच्छा अगर कोई 10-15 साल हो गए इंसान का हाँ हाँ, लेकिन इंसान खत्म हो जाता है ये तो मशीनरी से। अच्छा, ये खराब हो जाता है, खुद ही सही करते हैं या किसी करवाते हैं? खुद ही कर लेते हैं। ये प्रेशर वगैरह सही होता है? कितने गैलन है इसमें? है कितनी कैपेसिटी? गाइस, they have also tailor. They are sewing the clothes. होंडा ला सटवा गया। हां होंडा ला होंडा सारे निकल गए। लग गया? ओके, लेट्स गो फॉर लिटिल राइड। Okay guys, I think it's time for our video to wrap it up, and it was really nice to see this experience, and I wanted to show that how these guys fix those motorcycle and how mechanics work with minimal tools. So in West we are pretty privileged to have so much fancy tools, and they don't have those special tools, only hand tools, and they're working so good. Look at those guys. Okay guys. Okay, guys. Bye. Bye bye. Bye bye.